Be relaxed. Do not get attached to any particular thought. Just look at your thoughts as passing clouds. Do not judge yourself for getting those thoughts. It's the job of the mind to think. Let it think. Just look at your thoughts as witness. एक साक्षी भाव से अपने विचारों को देखिए from a distance. Like how we look at a cinema. एक हम मूवी देखते हैं. So there is a distance between you and the screen. Similarly, your thoughts are not you. Do not get attached to any one thought. Do not get attached to any emotions, feelings, pride, guilt, happiness, sadness. All these are fleeting. All these are temporary. Drop this false identity of your name, your designation, your relationships. Drop this false notion that I am the doer. Drop this false identity that you are the owner. You are the owner of this body, this house, this car. All this brings asmita, ego within you, which is one of the five kleshas mentioned in yoga. Just drop the I sense, the ego, and learn to see everything with a sense of trusteeship that this moment, this body, this house, your duties as a parent, as a child, as a boss, as an employee, as a student, as a member of the society has been entrusted to us by the universe. All these do not belong to us. We are trustees. We have been given the responsibility to do the task at hand. Whatever is put in front of us by the universe, do it with a sense of trusteeship. Be involved. Do it with full spirit, with full dedication, with complete involvement in all your spirits at the same time. Get detached to the fruits of your action. Get detached to the results that you know at the end of the day that you did your best in whatever role universe put you in. You gave your 200%.
You gave your best, and then leave the rest to the universe. We start with Om chanting. So inhale on the spot wherever you are, and exhaling, chant Om 3 times on your own. So inhale. Do not take back support in this. Keep your back erect. Inhale. One last time. Inhale. Just be with the vibrations. Experience the peace, the silence of this short guided meditation about detachment. We start with a prayer, the surrender prayer. So join your palms in Namaste at the center of your chest. कायेन वाचा मनसेन्द्रिये वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि श्रीनारायणायेति समर्पयामि. Whatever I do, through thoughts, through my actions, through my words, I dedicate everything to the universe. This was the meaning of the mantra. Slowly and gently rub your palms. Shut your eyes. Gently open your eyes. Good morning. So those who joined slightly late. Yesterday I got a question from one of my students that how to not get attached, at the same time be involved in all your spirits. It was a very relevant question. किस किस के मन में ये क्वेश्चन कभी आया है that when we hear about detachment, हम detachment की बात करते हैं, हम बोलते हैं डिटैचमेंट हो जाएगा तो एक तरह से इसको कोई मतलब ही नहीं है, बोलते हैं ना कि यार इसको तो कोई परिवार से मतलब ही नहीं है. हाँ, he is like not getting involved in things. So do you really think, I want you to talk now, anybody can unmute yourself, that being detached, does it mean not being involved? You can come close to the screen if you want. You can come close to the screen today. Muktadi, maybe Anjana auntie. क्या लगता है आपको? What is your understanding of detachment? Anybody? डिटैचमेंट का मीनिंग हुआ आप कर रहे हो सब कुछ, परंतु उसके रिजल्ट से आप अफेक्ट नहीं होते हो. मे बी द हैप्पीनेस और द सॉरोनेस विच यू गेट फ्रॉम दैट वर्क, यू डोंट लेट योरसेल्फ अफेक्ट विथ इट. और एक्चुअली ऊपर से अफेक्ट नहीं होना चाहिए, खाली अंदर से पूरा अफेक्ट नहीं होना चाहिए. आपने शेयर्स का काम किया, अभी आपको उसमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ओके, इट्स कंप्लीटली ओके, यू एक्सेप्ट इट एज इट इज. और सिंपली एक गृहिणी अपने लिए घर में सबके खाना बनाती है, तो उसको वो अटैचमेंट रहता है कि नहीं नहीं ऐसा करना है, वैसा करना है, घर को इस तरह रखना है, तो दैट इज अटैचमेंट. बट वो डिटैच्ड हो जाए कि मैंने अपना काम फुल्ली किया, आइदर पीपल एक्सेप्ट इट और नॉट, दैट्स देयर प्रॉब्लम, बट आई एम हैप्पी दैट आई डिड माई बेस्ट.
राइट, मुक्ता दी ने काफी पॉइंट्स टच किए जो मैं टच करने वाला था. मेन थिंग शी सेड दैट डू नॉट गेट अटैच टू द रिजल्ट्स ऑफ योर एक्शन, बट वी लर्न इन द मेडिटेशन आल्सो. वेरी करेक्ट. Yes, so you should do your duties without getting attached to the results. At the same time, उन्होंने दो examples दिया, one of the homemaker and one of the stock market. Like not get attached to the profits or losses, whatever you get. Very relevant, very relevant. Okay, I would so like to before coming add to the here, attach, yeah, Vishal, yeah, I would like to add one thing that by doing these classes, if we know the what is the real purpose of life, okay. So anything that what we are doing, we have to understand that if this moment is perfect for me and if I'm adding value to this, okay, that is something which is designed by the universe for me at that point of a time, okay. So result is also something which is designed by the universe. So that acceptance has to come, okay, that whatever it may be, whether it's in favor or unfavor for me, it is the best thing that what is happening with me and I have to enjoy this moment. beautiful, Vishal, beautiful. Absolutely. That we understand that this moment which is there in front of us has been created by whom? The creator, the universe. And we are here just to add value to that from our own experience. We are just to add value to that. And we understand that the results also, the fruits of our action, that are also designed by the universe. Beautiful, Vishal. Amazing. You taught me a new concept today. You taught me a new concept that results are in fact designed by the universe. ओके, तो हमें पहले समझना पड़ेगा दो चीज यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप ये समझ गए ना, मोस्ट ऑफ योर लाइफ प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्व्ड. ओके, नोट डाउन इन योर बुक ऑल्सो दैट दो माइंड होते हैं. ओके, एक माइंड नहीं होता है. वन इज द फाइनाइट माइंड दैट वी हैव. अवर माइंड इज फाइनाइट. ओके, एक लिमिटेशन है, हमारे माइंड का एक लिमिटेशन है दैट वी कैन ओनली थिंक दिस मच. सपोज वी कैन ओनली थिंक दिस मच. And other is the infinite mind. Other concept is the infinite mind. So any guesses what is the infinite mind that I'm talking about? क्या हो सकता है ये? Any guesses? Maybe Anshu, Pooja, Anjana aunty who haven't spoken yet. Maybe Priya, yeah, or anybody else wants to, like जिसका कैमरा ऑन है मैंने उसी का नाम लिया. What is the infinite mind that I'm talking about? No points, no negative marking. Okay, कोई negative marks नहीं है इसका. You can try. It's not very difficult. Yeah, Anjana aunty? Having a larger vision. No. Is it about like the what, overthinking, like the thing, just by going by the word infinite, कि overthinking, like just कहीं पर भी mind direction कहीं भी चले जाना. No. Well tried, but no. We're not. This is not the correct answer. See, finite mind होता है जो हम सोच सकते हैं. Infinite mind होता है mind of the universe. You can say the creative mind of the universe. Okay. So what we are doing is that we are sometimes very rigid in our opinion. Okay. That I want things to go my way. चीजें मेरे हिसाब से होनी चाहिए. Then what are the terms that you can use with it? क्या आपके दिमाग में आता है when I say this, that आज का दिन मेरे हिसाब से चलना चाहिए, आज का वेदर मेरे हिसाब से चलना चाहिए, आज मेरे बच्चे मेरा बात मानना चाहिए, आज मेरी वाइफ मेरी बात मानना चाहिए, हालांकि कभी होता नहीं है वो. ओके. So what are the terminologies we can associate it with this mindset? क्या बोल सकते हैं इसको? What kind of mindset is this, Priya? Yeah. This is like ego. You have Ego, absolutely. Ego, Asmita. Yes, this is ego. And what else? One is ego we can associate with this kind of mindset, rigidity. Is it a fluid mindset or a rigid mindset? rigid. It's a very rigid mindset. Okay, एक rigidity अपने we can associate words rigidity. Is it a acceptance mindset or a non-acceptance mindset? Non-acceptance. Non-acceptance. पहला बात सबसे प्रिया ने very rightly said about ego, rigid, non-acceptance. तो क्या होगा जब ये सब आपके अगर एटीट्यूड ऐसा होगा व्हेन यू आर नॉट एक्सेप्टिंग थिंग्स, जैसा चीज हो रहा है चलने दो, यू आर वेरी रिजिड अबाउट थिंग्स दैट आई वांट थिंग्स टू गो माय वे, एंड देयर इज अ फॉल्स सेंस ऑफ ईगो दैट यू कैन डिसाइड हाउ लाइफ वुड पैन आउट, हाउ वुड थिंग्स बी, यू विल ऑलवेज सफर. सो बिफोर अंडरस्टैंडिंग अटैचमेंट we need to understand that we have this finite mind which cannot look at the larger picture. थिंक ऑफ योर लाइफ. हम जहां भी लाइफ में आज है, किसी ने सोचा नहीं होगा 20 साल 25 साल 30 साल पहले कि आप आज यहाँ पर होने वाले, वेदर इट्स गुड वेदर इट्स बैड.
nobody would have thought that हम मे भी लाइफ में इतना आगे बढ़ेंगे, या मे भी हमारी लाइफ में ऐसे लोग आएंगे, हमारी ऐसी शादी होगी, हमारे ऐसे बच्चे होंगे, हमें ऐसा घर मिलेगा, हमें ऐसा परिवार मिलेगा. किसी ने सोचा था 30 साल पहले ऐसा हो सकता है? Okay, so my question to you is, did you do this or did this happen on its own? It happened on Hmm? its own. It happens on its own. Beautiful. This is the understanding. बहुत important है ये समझना हमें before understanding the concept of attachment. तो see, attachment is one of the 5 kleshas. तो yoga में we have learned about the 5 kleshas. Just anybody wants to just name the 5 kleshas? को याद, किसी को याद है अभी तक 5 kleshas? अभी तक याद हो जाना चाहिए, at least my old students जो मेरे साथ 1 साल 1.5 साल से, उनको तो याद हो जाना चाहिए 5 क्लेश क्या होता है हमारे अंदर. या पूछा? I don't remember 5, but I remember first avidya, asmita, and I remember first 2. Okay, तो पहला पूजा ने बताया फर्स्ट क्ले. I don't know Yes. yoga, but to my understanding, it's Kam, Krodh, Lobh, Moh, Ahankar. That's what I've Okay, learned. calm, Krodha, Moha. Yeah, these are the 5 vices, but we are learning about the 5 kleshas. They are the 5. So, since Priya is new to the class, kleshas are about the 5 inherent defects in us. These are 5 inherent defects in us, which is the root cause of all our miseries, why we are suffering in life. And once you get an understanding of this, we can one by one work on that and lead a very peaceful life, lead a balanced state of mind. So, Priya, just to give you a background about yoga. So yoga is not about asanas or pranayam or anything. It is just about maintaining a balanced state of mind. Okay. So this is the end goal of yoga. Become one with the universe, yes. Samadhi, yes. But as defined by Maharshi Patanjali, जिन्होंने योग सूत्रस लिखे थे, he says yoga is about controlling the fluctuations of your mind. That's it. Okay. So for controlling the fluctuations of the mind, you need to understand हमारे अंदर 5 क्लेश होते हैं, 5 क्लेशास होते हैं. फर्स्ट वन इज अविद्या, मतलब इग्नोरेंस. सेकेंड इज अस्मिता, ईगो, जो आपने बात किया, ईगो, दैट इज ऑल्सो अ क्लेशा, अ डिफेक्ट. थर्ड इज रागा, अटैचमेंट. अटैचमेंट का हिंदी वर्ड होता है रागा, RAGA. फोर्थ इज द्वेष. द्वेष मतलब हो गया लाइक्स एंड डिसलाइक्स, मुझे ये पसंद है, मुझे ये नापसंद है. And fifth is abhinivesh, clinging to life. Okay. So पूजा, अंजना आंटी, विशाल, अंशु, अनिता भाभी, मुक्ता दी, आप लोगों को याद हो जाना चाहिए अभी. ओके. आई रिपीट. याद करिए, जैसे कॉलेज में कैसे पढ़ाई करते थे, स्कूल में पढ़ाई करते थे, वैसे याद करिए. ओके. आई रिपीट. अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष एंड अभिनिवेश. प्रिया, कैन यू म्यूट योरसेल्फ प्लीज? या, since the recording goes many places. Yeah, so yeah, thank you. ओके. तो ये 5 क्लेश है. तो अटैचमेंट कम्स थर्ड. इट्स इन द ऑर्डर, इट्स इन द दिस ऑर्डर ओनली. ओके. तो रूट कॉज क्या हो गया? तो एक आप ट्री, टेक एग्जांपल ऑफ अ ट्री, टेक द एग्जांपल ऑफ अ ट्री. तो द रूट्स ऑफ द ट्री, यू कैन कंपेयर दैट टू अविद्या और इग्नोरेंस. द रूट्स ऑफ द ट्री यू कैन कंपेयर, बिकॉज इग्नोरेंस क्या होता है? इट इज द फॉल्स अंडरस्टैंडिंग. तो पूजा विल एक्सप्लेन अस. पूजा को बहुत अच्छे से पता है. पूजा, व्हाट इज द बिगेस्ट इग्नोरेंस दैट वी हैव? पूजा ने पहले बताया इन द क्लास. शी इज लाइक ब्लैंक नाउ. मैंने क्या बताया? That like this will never happen with me. नो, Like when it comes to especially नो, with ये the तो मेरा death, लॉजिक है. ये तो मैं योगा का पूछ रहा हूँ. मैं योगा का पूछ रहा हूँ. मैं योगा का पूछ रहा हूँ. व्हाट इज द it is बिगेस्ट related to इग्नोरेंस? death. That ये मेरे को नो, कभी like नो, I have नो, come here नो, forever. नो, 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 नो. That is the अलग thing. That's a different thing you're talking about. What is the biggest ignorance that we have? पूजा ने पहले आंसर दिया है. पूजा has answered this correctly. Anybody else wants to try? वो सबसे बड़ी अविद्या क्या होती है? We think everything to be permanent. Permanent, yes. Muktadi, perfect. Muktadi, do you want to elaborate on this? Because I want you guys to come out of the shell now. I want you guys to elaborate. मैंने कई बार बताया विद्या के बारे में. What is the biggest ignorance? मुक्तादी, आपने राइट बोला. आपने, you are right, absolutely right. You need to unmute yourself. Because मुझे जो बोलेगा ना, मुझे पब्लिक स्पीकिंग का डर है, तो मैं उससे ज्यादा पब्लिक स्पीकिंग कराऊंगा उससे. So be careful what you say in front of me.
No problem. See, there is I nothing can't right, nothing explain. wrong. I can't explain actually. I'll ask you questions. You just answer to my question. तो आपने क्या बोला? What was the biggest ignorance? What did you just say? That everything is permanent. We believe in this. Everything is permanent. Permanent, तो we believe. everything, yes, everything is permanent का मतलब क्या हुआ? Do things change or are things constant? We believe that everything will remain the same. It will never change. Yes, and that is the wrong knowledge. So Thinking. अविद्या मतलब होता है wrong knowledge. And सबसे बड़ा wrong knowledge यही है about the permanence of things around us, of us, because हमें क्या लगता है हमारे बच्चे हमेशा हमेशा रहेंगे, ओके हमारे माँ बाप हमारे हमारे साथ हमेशा रहेंगे, ये बिजनेस हमारे पास हमेशा रहेगा, ये घर हमारे पास हमेशा रहेगा. तो सी देयर आर टू नेचर जो इफ यू थिंक अबाउट द नेचर ऑफ थिंग्स एंड बीइंग्स, वन इज इटर्नल, वन इज एफिमेरल. ओके, इटर्नल मतलब क्या होता है? वी थिंक दैट एवरीथिंग इज हियर फॉर एवर. तो दिस इज द रूट ऑफ ऑल योर सफरिंग. बट व्हेन यू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ थिंग्स एज एफिमेरल, एफिमेरल क्या होता है? थिंग्स विल बी चेंजिंग, जो अनित्य भावना, व्हाट वी लर्न इन आवर क्लासेस. Anybody wants to read out anitya bhavana here? It's very relevant here. Anitya bhavana. Anybody? For new students, Pooja is going to read out. Yeah, Pooja. So it is, what is there in the morning is not at midday. What was at midday is not at night. Yes. For Yeah, I all, just said. I'll let you just elaborate here. So anitya bhavana is the understanding. Pooja, can mute yourself now. Yeah. Anitya bhavana is the understanding of impermanent nature of things and beings around us. So this is a technique in yoga. So if anybody is struggling with attachment here, or not able to let go, तो I will share in the group. मैं group में share करूंगा. There are a few lines that you should recite daily in the morning and evening after waking up and before sleeping. Okay. So पूजा ने कैसे बोला that whatever is there in the morning is not there at midday, and whatever is there at midday is not at night. So ये क्या बोलता है? What does this signify? Anybody else than Pooja? Maybe Amu, you have not shared it till now. Mohinder ji, जिसने share नहीं किया अभी तक. What do you understand by this term? अभी तक जो हमने सीखा नित्य भावना के बारे में. Things are constantly changing. Things are constantly changing. Pooja, can you read out the last line only now? Only the last sentence about attachment. why should I be attached to anything when nothing is permanent and everything is changing? So why should we get attached to anything in life when we know the nature of things, that nothing is permanent? Why are we suffering in life thinking that मेरा बेटा तो मेरे साथ हमेशा रहेगा, या मेरे पेरेंट्स हमेशा रहेंगे, या कभी किसी अनफॉर्चुनेटली अगर किसी की डेथ हो गई फैमिली में, हाउ डू वी सफर? नाउ वी अंडरस्टैंड व्हाई डू वी सफर, बिकॉज ऑफ द अटैचमेंट टू दैट पर्सन. So, जो last क्लेश है, अभिनिवेश, when you understand that clinging to life is also a klesha, that we are clinging to our life, our parents' life, our children's life. कैसे हमारे फादर को अगर कुछ हो गया, जैसे मेरे स्टूडेंट थे, 4 दिन पहले उनके फादर को चक्कर आया, and she got so much worried, इतना उसको स्ट्रेस हो गया. क्या था? That was a klesha, attachment to her father and clinging to life. तो we have to work on those two klesha, the attachment. अटैचमेंट के पहले क्या अंडरस्टैंडिंग जरूरी है? मैंने क्या सिखाया? अटैचमेंट के पहले क्या अंडरस्टैंडिंग जरूरी है? Acceptance. First thing is acceptance. So the affirmation that we do in the morning, कौन कौन करता है affirmation? That कौन सा acceptance का affirmation है? कौन बताएगा? चलिए आज मैं नहीं बताऊंगा, आज आप लोग बताइए. My old students, what is the affirmation we do for acceptance? Anyone? My acceptance. I accept myself unconditionally. Okay. Then Yes. I am responsible for my perceptions towards people and situations. Okay. Then this moment is perfect, Yes. and this Yes. I'll one cover the more last main. is related to the I'll cover. time. I'll cover it. So my acceptance of this moment is total and complete. तो जब उसके फादर को चक्कर आया, she has to do her duty as a child. Yes, कि my father needs attention, my father needs treatment. Yes, but अंदर ही अंदर क्या attitude होना चाहिए उनका? That my acceptance of this moment also, when he is not all right, is total and complete.
बिकॉज इतनी सारे रिलेशनशिप्स हैं, वी आर लाइक इन द मिडल ऑफ अ कुरुक्षेत्र, दैट हमारे बच्चे भी है, किसी का बच्चा सफर कर रहा है, किसी के पेरेंट्स सफर कर रहे हैं, किसी का बिजनेस सफर कर रहा है, बिकॉज थिंग्स कैन नॉट गो एज पर अवर विश एंड फैंसीज. देर इज, हमने सोचा देर इज वन फाइनाइट माइंड जो हमारा माइंड है, एंड देर इज अ क्रिएटिव माइंड ऑफ द यूनिवर्स. Okay, so if things are not going your way, we have to learn, understand the fact that this is as per a bigger plan which my finite mind is not able to understand right now. तो मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा. लास्ट वीक मेरे पास एक स्टूडेंट है, उनका बेटा कोई कारण से सफर कर रहा है, ही इज नॉट एबल टू कोप अप विद स्टडीज. ओके, हमारा फाइनाइट माइंड क्या बोलते हैं? माय फाइनाइट माइंड सेज दैट पढ़ेगा नहीं लिखेगा तो जिंदगी में क्या करेगा, राइट? इफ माय चाइल्ड डजंट स्टडी, व्हाट विल ही डू इन लाइफ? कल ना उसको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा, कल ना वो बिजनेस नहीं कर पाएगा, कल ना उसकी शादी नहीं होगी, उसके फ्रेंड्स उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे. ये सब कौन बोल रहा है? इज इट योर फाइनाइट माइंड और द क्रिएटिव माइंड हु इज सेइंग दैट? Finite. Look at the example of Steve Jobs now. Steve Jobs was a dropout. He didn't enjoy studies. अगर वो अपने फाइनाइट माइंड के हिसाब से स्टीव जॉब्स चलता, would he have become Steve Jobs? Would the world have? Maybe not. Maybe not. He trusted his instincts कि ये पढ़ाई मुझे काम नहीं आ रही है. I'm not enjoying my studies. Maybe I'll do a calligraphy class. He dropped out. He did a calligraphy class. जो Steve Jobs का, I don't know अनुषा की टीम पढ़ाई कर रही है कि नहीं कर रही है. He did a calligraphy class. And from his calligraphy class, somewhere somehow he and his friend Steve Wozniak, उन्होंने मिलके गैराज में एक कंप्यूटर बनाया. And whatever he learned there, he put everything there. So now see, अगर वो calligraphy class नहीं करता, so maybe we wouldn't have this wonderful typography that we have today in our computers. See how things pan out when we surrender, when we are not holding on to things very tightly. So मैंने आपको features बताया about the finite mind: rigidity, non-acceptance, ego. The opposite of that is creative mind. So what all terms come to your mind when you ask about the creative mind? क्या क्या terms आते हैं आपके mind में? तो rigidity का opposite क्या हो गया? What is the opposite of rigidity? Flexible. Flexibility or Sorry? acceptance. No, non-acceptance का Flexibility. acceptance हो गया. Flexibility. Fluidity. You can say flexibility or fluidity. Yes, you can say fluidity. So one of the features of creative mind is fluidity. Fluidity मतलब क्या होता है? Going with the flow, not being very attached to any results or any situation also. Very important to understand fluidity. और क्या था? Ego. उन्होंने क्या बोला था? प्रिया said about ego. So what could be the opposite of ego? Anybody? Ego का opposite क्या हो सकता है? Humility. Humility is a, like I would say, it's a feature. It's not a, I would say, the opposite of ego. Opposite of ego is the true self. The understanding of true self, the consciousness, जो हम जीवन जांच में सीखे लास्ट वीक, बुआ जी से सीखा हमने, जो मैं मेरी क्लासेस में इतने सालों से सिखाते आ रहा हूँ. That you should know your true self. That you are not this body, this mind, but you are that consciousness, this continuum of things that is happening, and this body is also temporary. You understand the fact that you are the true self. जो नए स्टूडेंट्स हैं, maybe they are not able to understand this, don't worry, but you have to understand that you are something beyond this body. You are not the doer. That I sense, the false ego, उसका opposite हो गया the true self, the consciousness. And non acceptance, acceptance. So these are the properties, you can say, अगर आप ये सारे terms से आप relate कर पा रहे हैं, with surrender, with fluidity, with acceptance, with by knowing your true self, तो क्या होगा? It's like the creative mind, the creative mind, the larger mind, the universal mind, the universal intelligence, that is at play then, and that is orchestrating the dance around you of everything. You understand कि ये तो खेल चल रहा है, this everything is happening, it's just a play. जैसे मूवी कैसे देखने जाते हैं? You see a movie, शाहरुख खान और माधुरी दीक्षित रोमांस कर रहे हैं. Are they really romancing, or is it a screen जिसपे एक images पढ़ रहे हैं? Obviously they are not in front of you. Like certain light, sound, images are certain frequency पे, and you can see them dancing in front of you. Similarly, everything जो बोलते हैं ना मिथ्या, everything is a myth. I'm in front of a screen, I don't know whether it's the reality or the truth. अभी मैं सो रहा था, मैं सपने में कुछ देख रहा था. आज बहुत सारे सपने हैं मुझे. It was not a very sound sleep. So what's that, a reality or is this a reality? हो सकता है ये भी मेरा एक सपना है. हाँ, समझ रहे हैं आप? तो we only don't know that why this is happening to us, and it's a very beautiful thing, I would say.
I'll repeat. I don't know what is happening with my life. I don't know what will happen to my child. I don't know what will happen to my mother. I don't know what will happen to my business. And this is the most beautiful thing that can happen to me. Why? Q. Anybody? I Because want you this to is try at like least. infinite mind, like it is, everything is being, like it's not only me, it's the universe which is deciding. It's Absolutely. intelligence. Yes. And yeah, Vishal, but it's still not the right answer. It's correct, but not the right answer that I'm looking for. Yeah, Vishal. I will not have any fear in the mind then. And that's why if there is no fear, obviously that uh, the attachment, okay, that we are talking about, that will not exist. So Vishal is telling you, if you live your life this way, that everything is a myth, there will no fear. Yes, but see what happens is, मैंने बोला कि I don't know what will happen to me tomorrow, and that's a very beautiful thing because अगर हमें सब पता हो जाएगा, पहली बात जीवन जीने का मजा आएगा. अगर आपको पता है कल इंडिया पाकिस्तान का मैच है, सपोज इंडिया पाकिस्तान का मैच है, एंड उसका रिजल्ट क्या, मैच इज फिक्स्ड, यू नो कि विराट कोहली लास्ट बॉल पे छक्का मारेगा, इंडिया जीतेगा, क्या आपको मैच देखने का मजा आएगा? Will you enjoy that match? You know the result beforehand. This is the beauty of life. So I would say embrace the uncertainty. It's a very important term in my classes that you will hear very often. Embrace the uncertainty of life. अब बोलेंगे मनीष अनसर्टनिटी से तो फियर आता है. विशाल ने तो अपोजिट बोला, डर नहीं आएगा. इफ थिंग्स आर अनसर्टन, क्या स्टॉक मार्केट क्रैश करने वाला है आज, मेरे बच्चे का एग्जाम है वो पास होगा कि नहीं होगा, मेरा बच्चा लाइफ में क्या करेगा नहीं करेगा, मेरा बिजनेस कैसा करेगा, हाँ आज क्या होने वाला है, अरे बाप रे, डर आ जाता है मन में. डर क्यों नहीं आना चाहिए? बिकॉज यू नो नाउ दैट there is a creative mind of the universe that is at play now, and that creative mind knows better what is best for my child, what is best for my mother, what is best for my work, what is best for my health. So what do you think, are you more intelligent or is that creative mind more intelligent? The creative mind, because it is Obviously, the creative mind, yes. Yeah, because it is in operation for billions of years of existence. You are here for maybe 70, 80, 100, 120 years. But that has been in existence for billions of years. So, what is more logical, to be rigid or be fluid? Fluid, obviously, to be more fluid, to go with the flow, to understand that there's higher thing at play. Because when you think your life this way, जब हम life को इस तरीके से जीते हैं, there are infinite possibilities. पहले तो हमने एक पॉसिबिलिटी बना दी, मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, सपोज एग्जांपल. ओके, मेरा बच्चा अभी बीबीए कर रहा है, कल जाके वो एमबीए करेगा, फिर जाके वो बैंक में नौकरी करेगा, फिर उसकी शादी होगी, फिर उसके बच्चे होंगे. दिस इज बीइंग रिजिड. और एक है दैट माय चाइल्ड इज स्टडिंग, देयर आर इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज. कल पता नहीं वो स्पोर्ट्स पर्सन बनेगा कि यूट्यूब स्टार बनेगा कि वो इन्फ्लुएंसर बनेगा कि वो फुटबॉलर बनेगा कि क्या बनेगा, मुझे ही नहीं पता है. व्हाट्स देयर इज ब्यूटी इन द अननोन. देयर इज ब्यूटी इन द अननोन. सो हमारा जो अटैचमेंट होता है ना, दैट वर्ड अटैचमेंट दैट इज देयर, इट इज ऑल द अटैचमेंट टू द नोन. आई वुड से योर अटैचमेंट टू द पास्ट कंडीशनिंग. वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हमें जिस तरह से कंडीशन किया गया ना, हम सोचते हैं दुनिया हमारे हिसाब से चलनी चाहिए. तो वी नीड टू अनलर्न थिंग्स. वी नीड टू अनलर्न थिंग्स. एम्प्टी योर कप, जो हमेशा मैं बोलता हूँ ना, एम्प्टी योर कप एवरी नाइट बिफोर स्लीपिंग. कौन कौन करता है स्लीप अफर्मेशन होने के पहले, जो मैंने सिखाया था आपको? मैंने क्रिएटिव बहुत सुंदर डिजाइन किया था कैनवा. डू दो स्लीप अफर्मेशंस, बहुत इंपॉर्टेंट है. टू एवरी डे खाली कप में सोना है, खाली कप में उठना है. बिकॉज हु आर यू? यू आर दैट प्योर पोटेंशियलिटी. yet you can be what you want, you can do what you want. But when will this happen? जब हम rigid रहेंगे कि हम fluid रहेंगे? That you are fluid, you go with the flow. You understand that there's a dance, there is a dance that has been orchestrated by whom? But not by us, by the higher universe, by the higher reality, by the universal intelligence, which knows far much better what is good for me. कितना ब्यूटीफुल होगा लाइफ, दैट इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट इन फ्रंट ऑफ यू एवरी मोमेंट. तो फॉल्स दिस अटैचमेंट जो है, ये दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स. पहले रूट पे जाना है, बिकॉज यू कैन नॉट जस्ट ट्रीट अटैचमेंट की बी डिटैच बी डिटैच बी डिटैच जो हम सुनते हैं.
जो हमें गुरुज बोलते कैसे डिटैच होना है वो कोई बताता ही नहीं. प्रॉब्लम इज दैट योर अटैचमेंट आया कहाँ से, किस चीज से अटैचमेंट है हमें, व्हाट इज द. सो टुडे वी लर्न अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. दिस थिंग आई गेस यू विल लर्न एनीवेयर. ये अटैचमेंट की बातें हम कहीं भी सीखेंगे. स्टडी दिस, मेक दिस अ पार्ट ऑफ योर डीएनए. दैट कभी भी कोई चीज हमारे हिसाब से नहीं चल रही है, माइंड में आ जाना चाहिए. दिस क्रिएटिव माइंड ऑफ द यूनिवर्स दैट इज एट प्ले. ऑटोमेटिकली आपका सारा स्ट्रेस दूर हो जाएगा. देयर विल बी नो अटैचमेंट टू द रिजल्ट. बिकॉज मुझे मालूम है कि हाँ, मेरे बच्चे को क्लास में टॉप करना था, आज वो सेकंड आया, उसमें भी कुछ अच्छा ही होना होगा. वो फेल भी होगा तो क्या है, देयर इज नो फेलियर इन लाइफ. ही जस्ट फेल्ड इन एन एग्जाम. ही इज नॉट अ फेलियर, कंप्लीट फेलियर. मैं भी फेल हुआ था. यू बिलीव आई फेल्ड इन माई 9th grade in English. I could not speak English after my 10th exam also. So was I a failure? Hmm? Or did I just fail in one exam? English. English was my biggest fear because I was from a Hindi speaking family. Hindi बोल बोल के हम बड़े हुए. And now look at my English now. So it was just a skill which I not excelled at. And हम बच्चे को क्या पेंट कर देते, my child is a failure. हाँ, मेरा बच्चा जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता. ऐसी ऐसी बातें मुझे सुनने मिलती थी. That he cannot do anything in life, and that drops his self confidence. So never do that to your child, never do that to anyone, be it your employee, be it your friends. Never paint anyone just because of one failure in life in black कि हम उसको पूरा एक उसकी जिंदगी फेलियर बना दें. There are many aspects to our life also. कौन mistakes नहीं किया life में यहाँ पर? Anybody here who did not do any mistakes in life? I guess no one. We all do mistakes in life, but we have to accept the fact, understand this fact that we all are humans. We all are humans. We are not meant to be perfect. There is nothing called as perfection in the universe. There is no mountain peak which is symmetrical, no wave जो एक जैसा आता है एक जैसा जाता है. Everything is asymmetrical. But we are all, ये भी समझना है that we are all perfect in our own imperfections. We are all perfect in our own imperfections. Why? Because we know that ये जो perfect है ये भी हमारा एक attachment है कि everything should be my way. It's an attachment to the situation, attachment to the moment, which is creating all the palpitations. जो हमको palpitations होते हैं कि यार मैंने एक स्टॉक खरीदा, उसका प्राइस 20% बढ़ना चाहिए था, 20% क्यों गिर गया. धक 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 चालू हो जाता है. जो स्टॉक मार्केट का एग्जांपल मुक्ता दी ने दिया. हाँ, कि मेरा बच्चा तो यार पढ़ाई करने गया, वो फेल कैसे हो गया. धक 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 चालू हो जाता है. क्या होगा उसके लिए. समथिंग गुड इज गोइंग टू इमर्ज आउट ऑफ इट. ऑलवेज हैव दिस एटीट्यूड कि वॉट एवर इज हैपनिंग समथिंग ब्यूटीफुल विल इमर्ज आउट ऑफ इट. तो मुझे बीमारियां हुई, कितना अनफॉर्चुनेट था कि 24 साल की उम्र में मुझे पता चला कि मुझे 4 बीमारियां हैं. बट बिकॉज ऑफ दैट डिजीज आई वेंट टू द योगा इंस्टीट्यूट एंड माय एंटायर लाइफ चेंज आफ्टर. My business transformed after knowing this knowledge. My health improved. And here I'm teaching so many people with of this knowledge. So what is a good thing or a bad thing? At that time, my finite mind told that this is a disease is a very bad thing. Finite mind क्या बोला? Disease is a very bad thing. But now look at the universal intelligence at play. कि had I not got those diseases, आज मैं शायद आप लोग को सिखा नहीं रहता. शायद. I would have not spread this knowledge and transformed the lives of so many people around the globe. कि कितने लोगों की बीमारियां ठीक हो गई, कितने लोग डिप्रेशन से निकल गए, कितने लोग लाइफ जीना सीख गए. I'm giving so many examples to make your understanding perfect. That why we should not get attached to any particular moment. So do this अनित्य भावना, very important. अनित्य भावना सब लिखिए, प्रैक्टिस करिए, याद करिए. ज्यादा नहीं, 5-6 sentences है. There are only 5 to 6 sentences. But write this daily, early morning, late night, जब तक आपके पूरे डीएनए में अंदर तक आपके जहन में वो चले नहीं जाएगा. एंड दिस सेशन को बार बार देखिए. आज जो हमने सेशन डिस्कस किया, दिस इज नॉट मी टेकिंग द सेशन. दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एटीट्यूड यू कैन हैव इन लाइफ. अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एटीट्यूड दैट आई एम नॉट द डूअर. सो आज क्लास किसने लिया? बाय मनीष संघाई? नो, मनीष डिडंट टेक द क्लास टुडे. यूनिवर्स टुक द क्लास टुडे. Automatically all the attachment goes away, all the ego goes away, all the pride goes away, all the fear goes away of judgment also. सारा डर निकल जाएगा आपके मन से. So always have this that you are not the doer, universe is operating through you. Have this attitude in life. Very important कि हमें अगर पीसफुल लाइफ जीनी है तो, हमें अगर हैप्पी लाइफ जीनी है तो बहुत जरूरी है ये अंडरस्टैंडिंग हमारे लिए. अदरवाइज क्या होगा, हम झूलते रहेंगे हैप्पीनेस एंड सैडनेस, सॉरो एंड मिजरी. ये जो डांस ऑफ द ऑपोजिट्स है, द द्वेष जो चौथा है. सी हाउ ब्यूटीफुल इट इज कनेक्टेड, ऑल द 5 क्लेशास. फिर अगर अटैचमेंट होगा तो द्वेष आएगा. द्वेष क्या होता है? पेयर्स ऑफ ऑपोजिट्स, लाइक्स एंड डिसलाइक्स, हैप्पीनेस एंड सैडनेस.
दिस पेयर्स ऑफ ऑपोजिट्स, हम उसमें झूलते रहेंगे पूरी जिंदगी, एंड देन यू सफर, एंड देन यू कम टू मी दैट मनीष व्हाट शुड आई डू, आई गो टू द बेसिक, गो बैक टू द बेसिक्स, गो बैक टू द बेसिक्स, जो हम सीख रहे इतने टाइम्स, एंड सी हाउ पीपल्स लाइफ आर बिकमिंग ईजी। मैं देखता हूँ नवमीत, शी इज यूजिंग सो मच एफर्टलेस इन वोकैबुलरी, लोगों की वोकैबुलरी चेंज हो रही है, पीपल आर चेंजिंग द वोकैबुलरी, दे आर बीइंग मोर एक्सेप्टिंग ऑफ थिंग्स। उनको लग रहा है कि लाइफ सच में, किस किस को लगता है, कैन यू शेयर, एनीबॉडी कैन शेयर एक्सपीरियंस फॉर न्यू स्टूडेंट्स स्पेशली, दैट योर लाइफ हैज बिकम एफर्टलेस इन द लास्ट 1 year or 6 months or 3 months you have been with me, after knowing these concepts जो हम बार बार सीखते आ रहे हैं? या एनीबॉडी वांट्स टू शेयर? मे बी अंजना आंटी, पूजा, मुक्ता दी जो 1 साल से हैं एटलीस्ट, मनमोहन जी, यू ऑल्सो स्पीक वेरी फ्लुइडली। मनमोहन जी, मे बी मनमोहन जी आपने शेयर नहीं किया, डू यू वांट टू शेयर योर एक्सपीरियंस दैट हाउ लाइफ हैज बिकम एफर्टलेस फॉर यू एंड हाउ you are more accepting of things? Yeah, I'm not putting words into your mouth, and your experience of the last 1 year in terms of your attitude, not your physical health, your attitude. Yeah, Manmohan ji. Yeah, so sorry, I'm outside actually. No मेरी problem. आवाज clear है? Yes, yes. Yeah, okay. So, like, मैं almost 11 महीने से with Manish जी हूँ, and the thing is exactly what he said ना, I was so rigid in so many of my things, my habits, my thought processes. सबसे पहले तो इनके साथ आने में वो खुला, and because of that मेरे health में transformation आया. Like, you know, I was more flexible in terms of, let's say, thinking that I can do yoga, I can reduce weight, I can change my diet. Like, I could never imagine that I could leave milk in my life, I'll tell you, or let's say sugar in my life. Born in a Marwadi family, it was so difficult for me to leave that. But that thing actually helped me, you know, basically to change myself. Okay. And consequences of that is I've lost weight, my eyesight has improved, my flexibility is improved, which is very very important, especially, you know, when you age your flexibility improves. And the thing is, again, you know, basically started accepting things, started, you know, matlab, resenting on things like, ठीक है कोई कुछ बोल रहा है, I'll listen to it, I'll do what I say, what I feel like, but I'll not react to things so fast. Okay. So those things have, you know, been very very so, you know, in my favor, and I feel the change in myself. There is so much more. I just haven't just that's all what I would like to speak now. But it has been a super transformation. You know, I would say the journey has been amazing. Actually, I would say. Thank you, sir. थैंक यू मनमोहन जी। सो सी मेन वर्ड में आपको पिकअप करूंगा मनमोहन जी ने जो बोला, द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट दिस कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ नॉन अटैचमेंट। तो ही वाज पहले रिजिड थे अबाउट हिज डाइट, अबाउट एनीथिंग इन लाइफ, एंड ही वाज लाइक नॉट सफरिंग बट नॉट इन अ पीक ऑफ हेल्थ आल्सो। when he like accepted things more, he learned a new way of living, he lost weight, his eyesight improved because of his fluidity, I would say. now अगर हम word of use करेंगे, because of his fluidity, was not rigid that हाँ मैंने 50 साल से जो मेरे माँ बाप ने सिखाया, जो मैं किया हूँ, that is only right. He unlearned things. See again, that unlearning happened, that maybe something is not right, that's why I'm not operating to my peak potential. कैसे उनका हेल्थ ट्रांसफॉर्म हुआ, कैसे उनका मोर एक्सेप्टिंग ऑफ थिंग्स हो गए, एंड कैसे ही इज लाइक मोर इन अ बेटर मेंटल स्टेट. दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू आर कंसिस्टेंट. मैं बोलता हूँ कंसिस्टेंट होना बहुत जरूरी है क्लासेस में. बी वेरी कंसिस्टेंट इन द क्लासेस. जो लोग एक्सरसाइज नहीं कर पाते ना, प्लीज कम फॉर द कॉन्सेप्ट पार्ट एटलीस्ट. पहला 15 मिनट हम जो कॉन्सेप्ट करते हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. एक्सरसाइज तो आपको कोई भी करा देगा, एक्सरसाइज कोई भी करा देगा, बट दिस कॉन्सेप्ट इतने सिंपल तरीके से, इतना आई एड अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑफ माई ओन ऑल्सो इन द मोमेंट. आई बिलीव मी, 80% थिंग्स आई डेंट थिंक, 20% हाँ मैं लिख के आया था, मुझे क्या बोलना है नहीं बोलना है, इट जस्ट कम्स इन द फ्लो. सो बी रेगुलर इन द क्लासेस. जैसे मनमोहन जी hardly misses any class, hardly misses any class. That's why this change. विशाल hardly misses any class. फॉलो करते हैं, बहुत जिद नहीं रखते अपना. कुछ कुछ स्टूडेंट्स मेरे क्या बहुत जिद्दी करते हैं, आर्ग्यू करते हैं. अगर मैं अपने टीचर से आर्ग्यू करता ना, आई वुड हैव बीन आउट ऑफ द इंस्टीट्यूट फर्स्ट डे, बिकॉज दे नो व्हाट इज गुड फॉर मी. ये हमें समझना पड़ेगा दैट माय टीचर नोज व्हाट इज गुड फॉर मी. either you trust me or you don't trust me. There should be not a gray line in within. That gray area नहीं होना चाहिए बीच में कि यार हाँ क्यों. हाँ, you can question me, there is no harm in questioning, but that question should not come out of your ignorance, not out of your ego, out of ki, I want to know more, Manish. Yes, obviously you have the right as a student to ask more, but if the trust factor is not there, then no point in coming to the class.
तो जब मैं योगा इंस्टीट्यूट गया, उन्होंने बोला मनीष तुम डाइट चेंज करो, तुम स्पाइसी फूड बंद करो, तुम फ्राइड फूड बंद करो. आई डेंट क्वेश्चन देम. आई जस्ट ट्राइड दैट. आई सरेंडर्ड. whom do I surrender to my teacher, to the universe, because I was suffering in my life. तो अगर आपको लगता है आप सफर कर रहे हैं, देन आइदर यू ट्रस्ट योर टीचर, यू डोंट ट्रस्ट योर टीचर. आई होप इशारा काफी है, मैं किसकी तरफ इशारा कर रहा हूँ, बिकॉज एक स्टूडेंट जस्ट ज्वाइन किया अभी, उनकी तरफ इशारा. ओके, सो नाउ डोंट लुकिंग एट द पार्टिसिपेंट ग्रुप कौन ऐड किया. बट चेंजेस आते हैं, चेंजेस डू कम इन योर लाइफ इफ यू आर कंसिस्टेंट. कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द क्लास. ओके, सो लेट्स लर्न सम प्राणायाम टुडे. आज हम प्राणायाम सीखने वाले हैं. वी स्टिल हैव 25 मिनट्स. एनीबडी वांट्स रेस्ट? के आज बहुत हेवी कॉन्सेप्ट हो गया, आई वांट टू लॉग ऑफ. यू कैन लॉग ऑफ, नो प्रॉब्लम. अगर आपको लग रहा नहीं आज मैंने बहुत सीख लिया है, तो इट वाज अ वेरी वेरी हेवी सेशन टुडे. बहुत हेवी सेशन था. अ लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स वी डिस्कस्ड. if you want to spend time in solitude, कि हाँ I want to spend time in solitude because I like sometimes before जो मैं सीखता था मेरे टीचर से, अगर बहुत हेवी कॉन्सेप्ट डिस्कस होता था ना, मैं लॉग ऑफ करके आई यूज टू मेडिटेट ऑन दैट. ओके, बट सिंस दिस इज अ ग्रुप क्लास, थोड़ा प्राणायाम सीखना जरूरी है हमारे लिए. हमारे लंग हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है प्राणायाम सीखना, फॉर योर लंग हेल्थ एंड फॉर योर सेल्स ऑल्सो. तो हमारे सेल्स का दो खाना होता है, मैंने पहले बताया. क्या होता है, किसी को याद है? हमारे सेल्स को दो चीज चाहिए ऑपरेट करने के लिए. क्या चाहिए? एनीबडी रिमेंबर्स? मैंने सिखाया पहले. नो, ब्लड. एक तो पहले ब्लड है एंड दूसरा ऑक्सीजन. ओके, ब्लड इज द कैरियर ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन हमारे ऑब्वियसली सबने स्कूल में पढ़ा है कि ऑक्सीजन कितना इंपॉर्टेंट है. तो व्हाट प्राणायाम डज, इट्स प्रोवाइड फ्यूल टू योर सेल्स. एंड हम सेल समझते, नाउ वी अंडरस्टैंड दैट आवर सेल्स आर अ सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म. देयर इज कांस्टेंट रीजेनरेशन हैपनिंग ऑफ योर सेल्स. कितने सेल्स होते हैं हमारे शरीर में? किसको याद है? हाउ मेनी सेल्स आर देयर इन आवर बॉडी? एनीवन? अराउंड approximately 75 trillion cells are there in our body. And how many cells regenerate daily? How many cells regenerate daily? 300 billion. तो कॉन्स्टेंटली आपके अंदर एक रिसाइकलिंग फैक्ट्री चालू है. आप उसमें कैसा खाना डालेंगे, आपके नए सेल्स वैसे बनेंगे. आप कितना ऑक्सीजन इनटेक रखते हैं, उतना आपके सेल्स हेल्दी होंगे. दैट्स व्हाई लर्निंग प्राणायाम इज नॉट अ वेस्ट ऑफ टाइम. मेडिटेशन इज नॉट अ वेस्ट ऑफ टाइम. दिस कॉन्सेप्ट्स आर नॉट अ वेस्ट ऑफ टाइम. दिस चेंज यू एट अ सेल्यूलर लेवल. अभी आपने जो 45 मिनट सेशन किया, दैट brought about a drastic change here in your brain cells, in your understanding of life. So my request to all, lightly मत लीजिए इसको. these sessions कई लोग नहीं कराना चाहते हैं. रीटा भाभी absent, I don't know why she is absent. she is so consistent. रीटा भाभी अगर रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, please come to these sessions. don't think of this कि खाली कॉन्सेप्ट है ये. these are in fact more important than my exercise. मैं तो बोलूंगा एक्सरसाइज भी इंपॉर्टेंट है, बट these are more important अंडरस्टैंडिंग. तो ब्रीदिंग में सबसे बड़ा गलती क्या करते हैं ना, वाई प्राणायाम इज इंपॉर्टेंट, हम ब्रीदिंग बहुत शैलो ब्रीदिंग करते हैं. ओके, तो इनफैक्ट हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है डजंट स्टॉप हियर, डजंट स्टॉप एट लंग्स. जो बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, इट इज स्टिल योर डायफ्राम, बिलो योर डायफ्राम. इनफैक्ट जो डायफ्राम, देयर इज अ मसल हियर. हमारे पेट के ऊपर एक मसल होता है, ओके, विच इज कॉल्ड एज डायफ्राम. तो डायफ्राम जब हम इनहेल करते हैं, डायफ्राम नीचे प्रेस होता है. ऐसे ही समझना जरूरी है, द एनाटॉमी ऑफ द बॉडी समझना जरूरी है हमें. तो डायफ्राम इज अ इन्वर्टेड यू. It is an inverted U which is there just above your stomach like this. Okay, अगर मैं इनहेल करूंगा तो डायफ्राम नीचे प्रेस होना चाहिए एंड पेट हमारा हल्का सा फूलना चाहिए. ओके, दैट इज कॉल्ड एज कंप्लीट ब्रीदिंग. हम ब्रीदिंग कहाँ करते हैं? खाली यहां तक करते हैं. मैक्सिमम लोग यहां तक करते हैं, कुछ कुछ लोग यहां तक तो जाते हैं, डीप ब्रीदिंग करते हैं, बट ब्रीदिंग हमारी यहां तक होनी चाहिए. ओके, सो फर्स्ट ब्रीदिंग वी आर गोइंग टू लर्न इस प्राणायाम नंबर 4. बहुत देर से बैठे हैं, पहले लेट जाएंगे. एवरीबडी लाई डाउन ऑन द मैट and keep your head towards the screen ताकि आपको सुनाई दे दे. Don't keep your feet towards the screen. Keep your head towards the screen. जिसके पास मैट नहीं है बैठ के भी कर सकते हैं. You can do this sitting also, but I prefer lying down. I prefer lying down. So if you have mat with you, please lie down on the mat. This is one of the most important pranayam that you can learn in your life. अगर आप एक प्राणायाम करेंगे ना, this takes care of many other pranayams. This is called as abdominal breathing. और at the institute we call this pranayam number 4. आप बेड पे भी कर सकते हैं. You can lie down on the bed also. जस्ट रिलैक्स योरसेल्फ. अगर किसी को स्ट्रेच करना है ऊपर, एक बार यष्टिक आसन में हाथ ऊपर करके या फिंगर्स इंटरलेस करके आप स्ट्रेच कर लीजिए थोड़ा सा. बहुत देर से हम बैठे. टेक योर बोथ द हैंड्स अप. जो लेटे में, टेक बोथ द हैंड्स अप.
एंड जस्ट स्ट्रेच, थोड़ा ट्विस्टिंग कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ट्विस्टिंग, फॉरवर्ड बेंडिंग, थोड़ा सा मूवमेंट दे दीजिए शरीर को। जो बैठे हुए हैं आगे भी झुक सकते हैं, पंकज भी आप लेट जाइए, मैट है ना आपके पास, लेट जाइए, लेट के ज्यादा अच्छा हो। साइड का सपोर्ट लेके लेटना है, साइड का सपोर्ट लेके लेटिए, यस। कभी बैक इंजरी नहीं होगा आपको अगर आप साइड का सपोर्ट लेके लेटेंगे, नो प्रॉब्लम मुक्ता दी, नो प्रॉब्लम। आराम से लेट जाइए, बी कंफर्टेबल, थोड़ा सा फिंगर स्ट्रेच कर लीजिए, आर्म स्ट्रेच कर लीजिए, लूजन अप करिए, बेसिकली लूजन अप योर बॉडी, शोल्डर स्ट्रेच। So good that people keep asking me these questions about acceptance, about attachment. And it's not possible for me कि एक एक मैं individually सिखाऊं सबको, तो I just cover these concepts in my concept classes. And morning time brings out the best in me, early morning. तो अच्छा है कि morning sessions ही करते हैं इसके. So that's why future master classes also I'll take in morning only. जो आया ठीक है, जो नहीं आया ठीक है. Because I want to give my best as a teacher. हो गया सबका stretching हो गया. So this pranayam we are going to do. This is called as abdominal breathing. Okay. So जो लेटे हुए हैं ना, just bend both your feet. दोनों पैरों को आप bend कर लीजिए. I'll just show you. Bending मतलब क्या रहता है? From your knees. So this way. Just bend both your legs. Okay. So your right hand will be on the navel. Right palm on the navel. Left palm near the body. Palms facing the ceiling. Okay. Your knees will be together. Knees together. Feet slightly apart. Knees चिपके हुए रहेंगे आपके. And feet slightly apart. Just settle down आराम से. And then take one deep breath. Inhale. And exhale. Inhale. And exhale. जब हम इनहेल करते हैं हमारा पेट फूलना चाहिए, हमारा पेट ऊपर आना चाहिए। जब हम एक्सहेल करते हैं तो पेट हमारा अंदर जाएगा। कंटिन्यू ऑन योर ओन, अपने आप कंटिन्यू करिए। लेट मी चेक। सिटिंग भी कर सकते हैं अगर आप मैट नहीं आपके पास। सो दिस इज प्राणायाम इज कॉल्ड diaphragmatic breathing, wherein your diaphragm is being pushed down. अंजना आंटी थोड़ा नीचे, हाथ थोड़ा नीचे रहेगा आपका नेवल पे, हैंड्स ऑन द नेवल, यस, palms on the navel. Just continue. We'll do a guided pranayam. पहले आप अपने आप करिए एंड जस्ट सी आपका पेट फूल रहा है कि नहीं फूल रहा है। किसी का नहीं फूल रहा है तो मुझे बताइए, आई जस्ट गाइड यू अगेन। So here you are oxygenating all the cells of your body because this is very deep breathing that we are doing. जो हम फैंसी प्राणायाम टीवी में देखते हैं, many babas do fancy pranayam, that is actually not required and not good for your heart also. Very jerky movements please don't do, especially people with high blood pressure or people who are obese. jerky movement अच्छा नहीं होता हमारे शरीर के लिए। We'll start with a guided pranayam now. So जहां भी आप exhale कर दीजिए, just exhale, आपका पेट अंदर की तरफ जाएगा। And we will now do on a count of 4. तो I'll say inhale 1, 2, 3, 4. तो धीरे धीरे आपका पेट ऊपर आना चाहिए on a count of 4. Then I'll say hold 4. आपको होल्डिंग करना है। कौन होल्ड नहीं करेगा? जिसको हाई बीपी की अगर कोई दवाई ले रहे हैं तो आप होल्ड नहीं करेंगे। ओके, अदर्स होल्ड फॉर 4 काउंट्स। Then I'll say slowly exhale for 4 counts and then suspend for 4 counts. Okay, so it's a kind of box breathing we are doing with our abdomen. Okay, show me a thumbs up if the instructions are clear, or do you want me to repeat the instructions? Clear, most of you? Great. Come. So right hand on the navel, exhale completely. Start. Inhale 1, 2, 3, 4. Hold 1, 2, 3, 4. Exhale 1, 2, 3, 4. Suspend 1, 2, 3, 4. Normal breathing करिए।
Once again, inhale 1, 2, 3, 4. Hold 1, 2, 3, 4. Exhale 1, 2, 3, 4. Suspend 1, 2, 3, 4. Normal breathing. Inhale 1, 2, 3, 4. Hold 1, 2, 3, 4. Exhale 1, 2, 3, 4. Suspend 1, 2, 3, 4. Normal breathing. Now the same pranayam we will do with Gayatri mantra. तो गायत्री मंत्र के भी 4 पार्ट होते हैं. तो फर्स्ट पार्ट जो है उसमें हम इनहेल करेंगे. डोंट वरी, मैं आपको गाइडेंस दूंगा हाउ टू डू इट, बट इट विल बी अ वेरी रिलैक्सिंग एक्सपीरियंस. बिफोर दैट आई जस्ट list down a few benefits of this pranayam. First of all, this pranayam is very helpful in inducing sleep. तो अगर किसी को भी स्लीप इश्यूज हैं तो आप दिन में 2 से 3 बार करिए, स्पेशली सोने के पहले करिए इसको. इट विल रिलैक्स योर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. इट विल एक्टिवेट योर PSNS, which is helpful in rest. Okay, so you will feel very relaxed after the session today because your PSNS, your parasympathetic nervous system, is activated. This is the logic behind this pranayam. So इस समझ से करना है, हमें ये समझ से करना है कि अपना PSNS एक्टिवेट कर रहे हैं. तो नाउ हम इसमें ऐड करेंगे गायत्री मंत्र. तो गायत्री मंत्र की 4 पंक्तियां होती है. फर्स्ट इज ओम भूर भुव सुहा, उसमें हम इनहेल करेंगे, देन वी विल होल्ड, then exhale and then suspend. Okay, come, we start. I'll give you instructions, don't worry, instructions dunga. So start, let's start. Be ready. So inhale Om Bhurbhuvah Swaha. Hold Tat Saviturvarenyam. Exhale Bhargo Devasya Dhimahi. Suspend धियो यो नः प्रचोदयात्. Normal breathing. Once again, inhale Om Bhurbhuvah Swaha. Hold Tat Saviturvarenyam. Exhale Bhargo Devasya Dhimahi. Suspend धियो यो नः प्रचोदयात्. Inhale Om Bhurbhuvah Swaha. Hold Tat Saviturvarenyam. Exhale Bhargo Devasya Dhimahi. Suspend धियो यो नः प्रचोदयात्. Inhale Om Bhurbhuvah Swaha. Hold Tat Saviturvarenyam. Exhale Bhargo Devasya Dhimahi. Suspend धियो यो नः प्रचोदयात्. अपने आप करिए इनहेलेशन एक्सहेलेशन. मैं करिए. आई जस्ट रीड आउट द गायत्री मंत्र. यू कैन डू ऑन योर ओन. ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात्. Continue. ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. One last time. ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. Normal breathing. चलो open your legs in front in Shavasana. दोनों पैरों को खोल दीजिए. Take both the hands to the sides. And just surrender to the higher reality, the universe. पूरे शरीर को आप ढीला छोड़ दीजिए. Do not hold on to anything, any thought. Just empty your cup completely. Just drop all your worries, all your anxieties. Because now you know that there is a higher intelligence at play, that creative mind of the universe that knows much better what is the best for you in every given moment. Let's be fluid, not rigid, more accepting of people, and situations, and just surrender completely to the moment in front of you. My acceptance of this moment is total and complete. I am involved in whatever I do. At the same time, I am detached to the consequences. I am detached to the results. पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. शान्ति शान्ति शान्तिः. Slowly and gently come back to body awareness. Give gentle movements to the fingers of your hands and legs. If you feel like lying down in Shavasana, you can lie down. Others, bring your feet closer. Slowly and gently, very slowly, turn to one side without opening your eyes. Make a pillow of your hand. आराम से पहले लेटे रहिए, दृढ़ासन में लेटे रहिए. It's a very good आसन. In fact, you can lie down in दृढ़ासन after your meals also. Left side हम लेट सकते हैं. Left side support लेके ऐसे हाथ का पिलो बना के हमें खाने के बाद लेटना चाहिए. It helps in better movement of the food in the stomach. Left side, not the right side. Okay.
Slowly and gently take support of your hand. Sit up with your eyes closed. Turn your palms in Namaste at the center of your chest. Bow down once to the universe for this beautiful day, this gift of this day. उस परमात्मा का शुक्रिया जिन्होंने एक और दिन दिया हमें जीने के लिए. So let's make a commitment to that universe that you will live this day to the fullest. 1 मिनट भी हम इसका वेस्ट नहीं करेंगे, व्यतीत नहीं करेंगे. You will eat the best foods, the right time, in the right quantity, knowing what is best for you. You will do your duties with a sense of detached involvement. Most importantly, you will surrender to every moment today. Slowly, with a smile on your face, rub your palms, come up. Rub your palms, cup your eyes. Very slowly open your eyes, take your hands wide. सब लोग चलो चलो चलो, take your hands wide. Our daily ritual, and अपने आप को hug करके क्या बोलना है? I love myself. Very important, very important. अपने आप को प्यार करना, अपना universe को gratitude बोलना हो गया. That I'm loving myself. Thank you very much. I planned some more pranayam, but concept was very important today, so that's why I just extended the concept. Yeah, Mohinder ji, any questions you have? You are raising your hand. No? You need to unmute yourself. आपको unmute करना पड़ेगा अपने आप. नहीं कोई खास क्वेश्चन है नहीं मेरा. No problem. No problem. Thank you for joining, and we'll meet next tomorrow. Tomorrow is our regular exercise class. Okay, and I hope everybody got the many answers today to their. हम कई बार एक स्टूडेंट सवाल करता है, जवाब सबको मिल जाते हैं. I just take inferences from everybody's life and just try to relate it. जो भी present होता है, don't take it personally. मैंने किसी का नाम भी नहीं लिया, and I'm just trying to help you out through these classes, through a better, higher understanding of how life operates. What I learned the hard way, I'm just trying to like simplify things for you. There's many things life teaches us. So we'll meet tomorrow. Yeah, Pooja, you can stop the recording now. Don't have the access, no problem. So any sharing anybody wants to do? Yeah, maybe Anusha, Priya. Anybody, any sharing today? I'll just stop the recording.